Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our first podcast with Connected Sisters. I'm Daniela and I'm coming to you with Anam. And our first topic today is from ego to empathy. First, I'll hand it over to you, Anam, as well, because I really want you to introduce yourself too. Go ahead. अस्सलाम वालेकुम. I hope आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे. You are welcome. Connected Sisters के first episode में जिसका टाइटल है ego to empathy. Let's dive in कि ego होती क्या है. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ego हम कहते हैं अना को. और what I have seen, ego has nothing to do with status, with money. किसी भी एक्सटर्नल चीज के साथ ईगो का ताल्लुक नहीं होता. One day I was listening to somebody and that scholar was like कि एक स्टेज होती है जिसमें इंसान हम उसको ऐसे देख रहे होते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन की स्टेट में है, राइट? और ही इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट. पीपल आर वर्किंग विद देम बट स्टिल देयर इन दैट स्टेज एंड हम उसको ऐसे देखते हैं कि भाई वो अभी नहीं आ पा रहा, वो अभी नहीं निकल पा रहा उस स्टेज से. बट इन रियलिटी बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं इगोइस्टिक थिंकिंग होती है जो चल रही होती है, जिसको वो बिलीफ बना के बैठे होते हैं कि जब तक ये सिचुएशन एक पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटकम नहीं आ जाएगा तब तक हम चेंज नहीं होंगे. ये अनकॉन्शियसली आपका बिलीफ सिस्टम बन गया होता है एंड दैट इज हाईली लिंक्ड विद द इगोइस्टिक थिंकिंग एज वेल. थोड़ी देर पहले बात की कि ego has nothing to do with money. Ego has nothing to do with. Yeah, go on. Oh, no, I was just going to bring it back to like an Islamic perspective as well, which, if we think about it, ego in Arabic would translate to the nafs. And as you were saying, it's not about the status or anything like that. It's the way we are perceiving things, the way how our desires are controlled by none other than our thinking or none other than our thoughts. It's about seeking validation or recognition. And I think when the nafs is dominating, then it can cloud our heart, it can cloud our thinking and lead to all sorts of different. So the ego itself isn't really evil. You're so right. I agree. और स्टार्ट तो ये यहाँ से होता है कि हमारे अपने आप से ये स्टार्ट होता है, हमारी अपनी थिंकिंग से, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से स्टार्ट होता है, राइट? लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके असरात हमारी अपकमिंग जनरेशन्स पे भी पड़ रहे होते हैं, हमारे जो इर्द गिर्द का सर्कल होता है उन पे भी पड़ रहे होते हैं, हमारा जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है हमारे ये असरात उन पे भी पड़ रहे होते हैं. rather than कि आप किसी और को देखें, किसी और पे नजर दौड़ाएं, किसी और पे नजर रखें, once we would start seeing from our own self what is actually going on for me, what is behind that egoistic thinking, or from where that egoistic thinking is coming in. जब हम उसको itself देखेंगे egoistic thinking को, yes उसका कहीं ना कहीं डीप डाउन जाकर देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमने ये चीज, बिकॉज जैसे बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक फितरा पे पैदा किया हुआ है, राइट? और वो फितरा बहुत प्योर होती है उसका, लाइक तो वो क्रिमिनल होता है ना, तो वो किसी रिलीजन से ताल्लुक रखता है और कुछ भी लाइक कुछ भी नहीं होता, राइट? वो बिल्कुल प्योर होता है, जिस एक फितरा पे, एक प्योर नेचर पे अल्लाह ताला ने उसको बनाया हुआ होता है और इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होता. तो जब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो दुनिया में आता है, फिर पता चलता है, वो सुनता है, वो देखता है, फिर वो लर्न करता है कि हाँ मेरा एक स्पेसिफिक जो है रिलीजन से ताल्लुक है, मेरा एक स्पेसिफिक जो है वो सेक्ट से ताल्लुक है, मेरा एक स्पेसिफिक ट्राइब से ताल्लुक है. स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लर्न करता है. और इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जो आपकी फैमिली में चल रही होती हैं,
कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे बने हुए होते हैं, कुछ कल्चर में ऐसी चीजें होती है, कुछ ट्रेडिशंस में ऐसी चीजें होती है कि जिसको हम समझते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा हो गया आ गया, या इसके पास ये गाड़ी आ गई, इतना पैसा आ गया तो बस इसकी अना बहुत बढ़ गई है. बट इन रियलिटी वी जस्ट हैव टू कीप दैट इन आवर माइंड्स कि ईगो हैज नथिंग टू डू विद दीज. But what I wanted to just share with you is that ego, it builds on the stories that we are creating in our own mind. You know, like stories of being better than or less than or different from others. You know, it's about the comparing. You know, these sort of things, they really affect our ego, especially the part of comparing, where we think we got to be better, we got to compete. Comparing comes with competition and wanting to do better, be better, feel better. Environment of like me versus them, or me versus, you know, something else. And it can get really difficult. We put ourselves in a difficult situation with that. आई एग्री. जो जिस तरह डनियाला बता रही हैं कि और ये कंपेयर वाली कंपैरिजन वाली चीज ये आती कहाँ से, ये उधर से आती है कि हम अपने एनवायरनमेंट से जो सीख रहे होते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से जो सुन रहे होते हैं, स्पेशली इन रिलेटेड टू द पेरेंट्स. पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि बिग कजन्स को देखो, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो उधर ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि इसको देखो उसको देखो, तुम्हारी क्लास में इसने ये पोजीशन ली, ये कर रहे, ये वो कर रहे हैं. तो ये अनकॉन्शियसली पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे होते हैं, पेरेंट्स बच्चों में डाल रहे होते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर अपना स्टेटस रखना है और इससे तुमने नीचे ना देखना है और ना उनके साथ उठना बैठना है और ना तुमने ये करना है ना तुमने वो करना है. हाँ, ये एक और चीज ये भी होती है कि वो अनकॉन्शियसली उनको ये भी बता रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं कि भाई ये तुम्हारा लाइक सर्कल को वो गाइड करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं कि भाई वो भी खुद देख रहे होते हैं कि हमें ये बेहतर लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस एंड ऑल ऑफ दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स. वो देखकर तो बच्चों को बताया जा रहा होता है कि ये ठीक है तुम्हारे लिए, तुम जो हो वो इसको इनके साथ सर्कल में रहो और इनके साथ बात करो और इनके साथ सब कुछ करो, लेकिन इन लोगों के साथ तुमने नहीं उठना बैठना, तुमने इन लोगों के साथ नहीं करना कराना. बट इन रियलिटी जब पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो हमें कंपैरिजन में तो ये चीज जाती है और कंपैरिजन फिर सिर्फ और सिर्फ इस हद तक नहीं रहता. बच्चा होता है और बात वही है कि जो उसकी नेचुरल फितरा, जिस फितरा पे वो पैदा हुआ है, उसमें ये चीजें नहीं थी, ये डिफरेंसेस उस फितरा में नहीं है. तो rather than putting all that in the innocent minds कि भाई ये वाला स्टेटस इतना है या ये डिजायर्ड स्टेट है, इसमें जाओ और इससे नीचे तुमने नहीं देखना ना तुमने जाना है. लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को इन फ्यूचर तैयार करना है तो वी जस्ट हैव टू टीच देम, वी जस्ट हैव टू गाइड देम कि दे आर देयर एज वेल. एंड once again ego has nothing to do with these external stuff. इधर पेरेंट्स की अपनी भी ईगो होती है, वो अपनी ईगो को अपने बच्चों में इस तरह ट्रांसफर कर रहे होते हैं और इसी तरह फिर बच्चे सीखते हैं. और जब वो बच्चे सीखते हैं तो फिर उनमें भी कंपैरिजन की एक जो वो होती है आदत वो आ जाती है. और वो जब आदत आ जाती है तो वो अपने आप को भी कंपेयर कर रहे होते हैं, सिर्फ नीचे वालों से नहीं, वो अपने आप को ऊपर वालों से भी कंपेयर कर रहे होते हैं. जो वो अपने आप को अपने ऊपर वालों से भी अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं तो फिर वहां पे डिप्रेशन भी आता है, उसमें वहां पे एंजाइटी भी आते हैं, उसमें वहां पे फिर पैनिक अटैक्स भी आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी आते हैं, उसमें हर एक चीज आती है, लाइक उसमें एडिक्शन भी आती है. एंड अगर हम देखा जाए तो ज्यादातर हमें केसेस ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि हायर स्टेटस में ये इतना ज्यादा ड्रग्स कॉमन हो गए हैं, इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी भी है कि वो जिसके पास गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है या जिसके पास थोड़ा जिसका उठना बैठना थोड़ा डिफरेंट है तो वो उसको कुछ समझते ही नहीं है. ये चीजें आपको दिखा रही होती है, निशानदेही कर रही होती हैं कि इस बच्चे में भी जो है ये वाले इश्यूज हैं.
तो रादर देन कि उनको इगोइस्टिक थिंकिंग उनमें इंडल्ज की जाए, उनको इगोइस्टिक थिंकिंग में इस तरह से ट्रेन किया जाए, थोड़ा सा हमें ये भी सिखाना चाहिए कि वी हैव टू बी एम्पैथेटिक एज वेल। But how do we be अगर हमारे empathetic though? पास Hang on. How do we be empathetic though if we don't know that? What it is about एब्सोल्युटली realizing that our feelings, the jealousy, the hurt, the desires, whatever that it is coming from outside of us. It's actually not coming from outside of us. It's only coming from our thoughts and our thinking in the moment. And it's not caused by other people. So nobody else can hurt us. Nobody else can cause us to, feel a certain way or be a certain way or be angry or anything like that. It's caused by us being angry, but from our thinking. And so this is where I think so many people are getting it wrong, where they think that it's coming from an outside source. And actually, I was just sharing this the other day, is that, Allah tells us we can't change a condition of a people until we change what is in ourselves, like in us. So it starts from us. It starts from us having that realization or reflecting on the inside that this thing or this person can't hurt me through their words or through their they might hurt through their actions, if it gets difficult. But if we're just talking about words, they can't actually hurt us unless we allow it to hurt us. It may hurt us for a little bit, but we can let it pass. How? By realizing that feelings come from thought in the moment. And with that, it allows us to really see that that's their reality. That's their ego. They can't put that on us. We can, like when you put a clothes on the coat hanger, you can take it off. Like I always say, just take the coat hanger off or take your backpack off, because it weighs us down. Like this thinking weighs us down. When we realize, that Allah doesn't change the condition of a people until we change what is in ourselves. It allows us then to just stop and think, what do I need to do right now? And that's, I think, as time goes on, we have that empathy. Like, how can people think like empathy for them rather than feeling angry about what they're doing? Having empathy, like, wow, they must be feeling really low, because really what at the end of the day is, it's a low level of thinking, low level of consciousness. It's our nafs in the lowest state. And that's when, all those stories can create and multiply and duplicate. And then we can bring other people into those stories to help build the situation, to make it even more dramatic, and we can get so many people come into it. When at the end of the day, when we see like that's ego. When we're trying to get other people to come into the story to fix it or to make it bigger or make it more, hurtful or whatever, that's it, the ego that's talking. That's not coming from our fitrah. That's not coming from a space of empathy or a place of neutrality. It's coming because we want to give them, a hard hit. But empathy, on the other hand, is when we can just come down from all that. And it doesn't happen easily. I can understand what you're trying to say. It's like uh, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम बाकियों को भी अपनी थिंकिंग में, बिकॉज जो हमारी थिंकिंग चल रही होती है हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, और जब हम उस पर बिलीव कर लेते हैं तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हमें ये चीजें ट्रांसफर भी करनी है। अब ट्रांसफर किन में करनी है? मैं एक दिन एक कोटेशन पढ़ी थी और उसमें ये था कि आपके सामने एक बंदा है, राइट, और वो आपके अगेंस्ट है, उसको कुछ हिट हुआ है और ट्रिगर हुआ है और वो आपके अगेंस्ट हो गया। वो आपके जब अगेंस्ट हो गए तो नाउ थिंकिंग इज गोइंग ऑन उसके अपने हेड में, और जब वो थिंकिंग चल रही है तो वो क्या करने लग जाता है कि वो
बाकियों को अपने साथ इंक्लूड करता है, वो गैदर अप करता है उन लोगों को जो उसको सपोर्ट करें और उसके सामने वाले के खिलाफ हो जाए। दैट्स हाउ दे वुड क्रिएट अ ग्रुप। और जब वो ग्रुप बना लेते हैं तो फिर वो ये समझते हैं कि बिकॉज हमारे पास एक ग्रुप आ गया, हमारे पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए इसके इसके डिफेंड में, तो फिर हम वो समझने लग जाते हैं कि भाई हम जीत गए हैं और वो हार गए। बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में हार आप गए हुए होते हो और आप उसी टाइम पे हार गए हुए होते हो जिस टाइम आप अपनी थिंकिंग को बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट करते हो और आप उसको समझने लग जाते हो कि ये हकीकत है, ये हकीकत है। और फिर थर्ड स्टेप पे क्या होता है कि यू स्टार्टेड गैदरिंग पीपल विद यू जो आपको सपोर्ट करे, आपके पॉइंट पे खड़े हो और आपके नजरिए से देखें। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, हर एक का नजरिया डिफरेंट होता है एंड वी जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट इट। एंड या देयर इज वन मोर थिंग, जिस डनियाला ने बोला, अगर लो लेवल थिंकिंग आ भी रही है ना, वी डोंट हैव टू जज दैट, वी डोंट हैव टू वी डोंट हैव टू मेक इट बिगर कि वो जो है कोई बहुत ही बड़ा मसला है। वो कोई भी बड़ा मसला नहीं होता। वी जस्ट हैव टू से इट कि भाई वो थिंकिंग एंड दैट्स इट। कोई वो ड्रामा नहीं है, कोई वो खौफनाक चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जस्ट थिंकिंग है, दैट्स इट। और उसको इतना बढ़ाने की और इतना वो करने की जरूरत नहीं है, ना उसको इतना उससे डरने की जरूरत होती है और ना उस पर इतना घबराने की जरूरत होती है। थिंकिंग है और वो थिंकिंग इटसेल्फ बिल्कुल न्यूट्रल होती है, ठीक है। उसमें ताकत कब आती है, जब हम उसके साथ कुछ चीजें अटैच करना शुरू कर देते हैं और ये हमारे पास होता है, हम कर रहे होते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, हम खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन इटसेल्फ थिंकिंग में इतनी पावर नहीं होती, वो खुद पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। इंसान को एक मिनट में, एक सेकंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही है, ये अल्लाह ताला के निजाम है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ ही इस तरह। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस थिंकिंग को किस तरीके से ले रहे हैं और किस थिंकिंग को हम किस तरीके से ले रहे हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं और हम इसको किस तरह आगे उसको ट्रांसफर करें। ये सारा हम पे डिपेंड करता है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो उसको सोचने और समझने की भी सलाहियत दी है। तो हमें रादर देन कि हम अपनी थिंकिंग को वो बनाकर या अपने एक्सपीरियंसेस को बनाकर कि हाँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है वो ही बस हकीकत है, उससे जो मैंने मतलब ले लिया बस वही हकीकत है, इसके अलावा कोई इसका वो नहीं है, दूसरा दूसरा लेंस नहीं है या बस वही है। तो उसमें ये होता है कि हम हकीकत से दूर जा रहे होते हैं। और हम जब हकीकत से दूर जाते हैं तो फिर सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होता, वो औरों का भी नुकसान हो रहा होता है, जो आपके लव्ड वंस होते हैं उनका भी नुकसान हो रहा होता है। तो रादर देन कि आप एक लेंस से देखें, आप मुख्तलिफ लेंस से देखने की कोशिश कीजिए कि एक चीज को देखने के मुख्तलिफ पहलू हैं। और हमें ये चीज आनी भी चाहिए कि, और इतना हमें अपने साथ जेंटल होना चाहिए कि हम एक चीज को मुख्तलिफ नजरिए से देखना शुरू करें। एकदम से नहीं होता कि आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे कि जिधर आप एक चीज को मुख्तलिफ नजरियों से देखना शुरू कर दोगे। बात वो ये कि आप शीशे को देख जब रहे होते हो तो वो आपको दिखा रहा होता है, आपका अपना आप दिखा रहा होता है। शीशे के पीछे क्या है वो नहीं हम देख सकते, वी कांट सी दैट अनटिल अनलेस कि हम जाएं और हम खुद कोशिश करें कि उसके पीछे को देखें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, घबराए नहीं। थॉट सिर्फ थॉट है, थिंकिंग सिर्फ थिंकिंग है, और वो उसमें इतनी जान नहीं है। अगर उसमें इतनी जान नहीं है तो फिर उसमें इतनी जान खुद डालने की भी जरूरत नहीं है। जो जिस तरह है उसको रहन दें, जो जिस तरह है उसको उस तरह रहन दें। इसका ये मतलब है कि थिंकिंग अगर उसमें इतनी पावर नहीं है ना, तो खुद से कुछ अटैच ना करें, खुद से कुछ डालें ना। इट्स ट्रू कि कभी कभार नहीं हो पाता, कभी कभार आप अनकॉन्शियसली आप इंडल्ज हो जाते हो और उस थिंकिंग में इतना डीप चले जाते हो, इतना डीप चले जाते हैं कि वो एक बहुत लोग भी उसमें आ जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा छोटे हिस्से का बहुत बड़ा ड्रामा भी बन जाता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल
our own thinking, और ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपनी थिंकिंग को कैसे यूज करें. Another point, और बहुत जरूरी पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि जो अंडरस्टैंडिंग आपको है वो अगले को भी हो. अगला हो सकता है कि वो इतना ज्यादा इगोइस्टिक थिंकिंग में चल रहा हो, या अपनी थिंकिंग में इतना ज्यादा उसको बिलीव करके बैठा हुआ हो कि आप इन रिटेलिएशन, आप अनकॉन्शियसली आप भी उसी के लेवल पे चले जाओ और आप भी फिर जो है वो अटैक्स शुरू कर दो. स्टिल अगर वो कर रहा है तो डिपेंड आप पे भी करता है कि आप उसको किस तरह ले रहे हो. रादर आप उसको इस तरह ले रहे हो कि भाई वो कर रहा है तो मैं उसका जवाब दूंगा, वो अगर इस तरह करे तो मैं भी उसको उसी तरह डील करूंगा. कि आप अपनी इगोइस्टिक थिंकिंग में जा रहे हो, आपकी इगोइस्टिक थिंकिंग हर्ट हो रही है. जब आपकी इगोइस्टिक थिंकिंग हर्ट हो रही है तो फिर आप उसको जो है फिर रिटालिएट करते हो, और फिर फ्रिक्शन भी आती है, रेजिस्टेंस भी आती है, और फिर मामला खराब भी होते हैं. फिर सिर्फ आपका और उनका ताल्लुक खराब नहीं होता, जो भी सामने है ताल्लुकात फिर बहुत से खराब होने शुरू हो जाते हैं. तो वंस अगेन, अगर कोई और कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी तरह करें, और जिस तरह वो चल रहे जरूरी नहीं है कि हम भी उसी तरह चले. अगले को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए कि वो हमसे कुछ भी करवा ले. कुछ भी करवा ले का मतलब ये है कि आ, वो अगर चीखम चला कर रहा है, या वो अगर कुछ बोल रहा है, या वो एक एक सेट ऑफ बिलीफ बनाकर बैठा हुआ है और वो ये प्रूफ करना चाह रहा है कि मैं ठीक हूं और आप गलत हो. स्टिल ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम बिलीव करें या ना करें, और हम किस तरह शो अप करते हैं, हम किस तरह आ, आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारे पे है. Jazakallah khair for that, Sister Anam. That was really powerful, and I think that's we were sharing the same thing, but you've nailed it beautifully. And then I wanted to add in there as well, like these this type of egoistic thinking comes from the shaitan, which I think I shared with you before. And when Allah subhanahu wa ta'ala asked Iblis to bow down to Adam, but Iblis responded from Surah Al-Araf, and I've just got it here. I'm better than him. You created me from fire and him from clay. And so this type of, egoic or egoistic thinking has been around. Well, it comes from the shaitan, because he thought he was better than Adam alayhi salam. We have free will, though. Us as humans have free will. We have the power to choose to either go down that path of the whispers of the shaitan, all that, which brings about a lot of fitna, a lot of fitna for yourself, families, communities. Or you can choose to go, you know what, I'm not going to do that anymore. I'm going to choose to go a different path. We have that option within ourselves to ask, is this pleasing to Allah for now and my hereafter? Just these two questions you got to, you ask yourself, and it will bring you back into the now. What happens is that in the now, there isn't that egoistic thinking, that ego thinking. It's just neutral. Your fitrah. That's exactly what it is. You're in your fitrah. It's not about delving into the past, divulging people into the story to, create problems or how they can do whatever it is. But really about asking yourself, it's that switch from that type of thinking to one that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And the other thing that I wanted to share with you is that how can we do that? Especially if it's something that we're not used to, but we want to change, that condition within ourselves. The first thing is to pause. That pause can be a short time or it can be a long time. In that pause, you zip your lips and put your hands in your pockets is what I like to say, because then you can't hurt anybody with your words and you can't hurt anybody with your hands. That's powerful. Even if someone triggers you or something triggers you, just pause.
And you may feel a lot of discomfort on the inside, especially when it's coming at you from all different directions. But it may not be your right time. That's when you realize that the triggers aren't coming from these outside things. It's coming from your thoughts, your feelings in that moment. I'll just say, like, that pause, I think I shared that just a moment ago, but it's so powerful. And it creates that space for the compassion to enter. It may not be in that moment. That may be it may not be in that moment because, first of all, it's that compassion for yourself. But that compassion will start to enter. That pause can be for a long time. It doesn't have to be just, a pause like now. It can be, go on for a little while until those feelings, those thoughts or whatever has settled. And you go, okay, I can move now. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, जिस तरह आपने कहा। आप एक्सक्यूज कर सकते हो when things are going hard और आपको ऐसे लग रहा है कि you can't control yourself or something goes off, तो you can take a pause और उस टाइम आप excuse ले लो। excuse करके you can take some time to pause, to reflect what is actually going on inside me। जब settle हो जाए thinking और थिंकिंग जो है थिंकिंग ऑफ हो जाए और उसके बाद जो विजडम है वो ड्राइविंग सीट पे आ जाए, देन यू कैन श्योरली कम बैक, यू कैन रिस्पॉन्ड। जो भी सिचुएशन है जैसे भी यू कैन टैकल, तब टैकल किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, रादर देन क्या आप उधर ही बैठे रहो, प्रेशर में बैठे रहो या जिस तरह भी रहो और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप एक टाइम आ जाए कि आप भी रिटालिएट करना स्टार्ट कर दो। So it's always good, always good to take a pause. Absolutely. And that's okay. कभी कभार मुश्किल हो भी जाए तो that's absolutely fine. You don't have to judge yourself. You don't have to get hard on yourself. Just take it easy. लेकिन just ये याद रखें कि we just have to be gentle with our own selves. On That's so our own important. selves. That's so important to be gentle with ourselves because we're our own worst critic at times. And that's also from our own ego, you know? And so that's the other thing to watch out is our own ego in the moment, where our thinking is coming from. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारी भी थिंकिंग कभी कभी आ जाती है, कभी कभी इगोइस्टिक भी आ जाती है, कभी कभी सैड भी आ जाती है, डिफरेंट इमोशंस आ जाते हैं और इमोशंस इटसेल्फ कोई बुरे नहीं होते। इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं और ये इमोशंस भी अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन और कभी कभार जिस तरह डनियाला ने बोला कि पॉज थोड़ा लंबा भी हो सकता है, दैट्स ओके अगर थोड़ा लंबा भी पॉज हो जाए तो जस्ट ट्राई कि सेटल हो जाए इमोशंस। जब सेटल हो जाए तो फिर आप वापस उस पर हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो नेक्स्ट पर्सन होते हैं दे आर डिमांडिंग कि आप इसी इसी टाइम रिप्लाई करो, इसी इसी टाइम रिएक्ट करो। ये स्टिल वी जस्ट हैव टू कीप दैट इन आवर ओन माइंड्स कि ये उनकी थिंकिंग चल रही है, ये उनकी डिमांड है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये उनकी वांट्स है। It still depends on us how we show up in that particular situation, in that particular circumstances. Absolutely. We don't have to sit there for long. We are allowed to just leave that space in, excuse करके अच्छे से we can get out, we can take a pause and we can get back after some time in a quite subtle way, जो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं, आपके प्यारों के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके सर्कल के लिए भी, और स्पेशली बच्चों के लिए जो देख रहे होते हैं, जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके लिए भी अच्छा हो। Yeah. I think you just started to touch on this as well, is that, the next part would be, seeing this innocence in people, when we can see that they are only acting from their own state of mind. When we see that, it softens our hearts for them. Like,
not pity, but I guess it's empathy, because it's not pity, it's empathy. Like, how can someone be like that? And, they're just doing the best from what they know. They don't know any better. They're at a lower They level of may not conscious. have seen it as well. Sorry, Oh, sorry. no, that's exactly right. True. They may not have seen it. They may not have observed the different way to tackle a particular situation. That's right. They can't know what they don't know. They can't see what they don't know, what they can't see. And they'll only do what they do from their level of consciousness, from their level of thinking, which is, sad to say, but it's at a lower level of consciousness. And so that's where we can see the innocence. They don't know any better. Not that we allow it, not that we allow, because of that we allow things to happen to us. No, that's where we put those what I call loving limits. We go, no, I'm not going to accept this. I'm not going to do this. And there may be that retaliation, a lot of retaliation, but that's because we need to do that. We can't let people overstep our own boundaries or overstep our limits, because then that's where, they'll just keep on doing and the cycle will keep on going. But when we go, hey, hang on a second, like, we don't need to say it to them, but hang on a second, this is stop. This is like, I'm not going to let myself get hurt, because we need to protect our own, we'll have that own self-compassion for ourselves, own empathy for our own selves, own respect for our own self as well. And that's where we can go, you know what? I can't do this anymore. When you're able to, step up or have that reflection, which I think is the next part, when we have that reflection and the remembrance of Allah, then maybe. But until then, it's like, no. And that's hard. I know that's a really hard thing to do. We can't always allow people to walk over us, because that's not self-respect for our own self. Something came up for me. Mm. Sometimes, most of the times, देसी इन्वायरमेंट में, हमारे कल्चर में ऐसे होता है कि अगर तो हम उन्हीं मोमेंट्स पे उनको जवाब दे रहे हैं, तो हम हो सकता है कि बदतमीजी भी कर जाए, हम लिमिट को क्रॉस कर जाएं और कहीं ना कहीं उनकी उनकी भी रिस्पेक्ट ना कर पाए, ठीक है, जिस तरह हमें उनकी करनी चाहिए। अगर हम तरीके से उन टाइमिंग्स में पॉज ले लें और कुछ देर बाद उनको जवाब दें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह करने से ना अगले की भी इज्जत रह जाती है और आपकी अपनी भी इज्जत रहती है, स्पेशली अगर कोई बड़े, बिकॉज हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये चीज है कि अगर बड़ा कोई बैठा, बड़ा कुछ बात करे, बड़ा कुछ सवाल करे, तो वी हैव टू आंसर दैट इन दैट सेम एग्जैक्ट मोमेंट। और अक्सर औकात उन टाइमिंग्स में हमारे अपने भी इमोशंस हाई हुए हुए होते हैं, तो हम जवाब नहीं दे पाते जिस तरह हमें देना चाहिए। तो इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें अक्सर औकात ये भी होता है कि जब आप पॉज के बाद आते हो, तो आप अपनी भी इज्जत कर रहे होते हैं, आप नेक्स्ट पर्सन की भी इज्जत कर रहे होते हो। एंड यू कैन से समथिंग लाइक दैट इन दैट मोमेंट्स, जब लाइक आपको इस तरह की कोई फील हो रही है, यू कैन सिंपली से दैट कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन टाइमिंग्स पे, मैं ये नहीं कह रही कि आप एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज करें, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये टाइम बेहतर है कि मैं जवाब सही से दे पाऊंगी जो मुझे देना चाहिए। जब मुझे बेहतर लगेगा, मैं आपकी बात का जरूर जवाब दूंगी।
और बस आप एक्सक्यूज करके और थोड़ा सा टाइम ले लें, दैट्स इट. और व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि जब आप पॉज के बाद आते हो ना, जो आपका कनेक्शन उनके साथ बिल्ट होता है, दैट इज सो पावरफुल. एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन बिल्ट होता है उनसे. जितना मर्जी आपका टॉक्सिक आपस में रिलेशनशिप हो, जितनी मर्जी टॉक्सिक सिचुएशन हो, जितने मर्जी जितना बड़ा चैलेंज हो, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल. लेकिन जब आप पॉज के बाद आते हो, तो जिस लेवल पे आप आके उनसे कनेक्ट करते हो, वो एक लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है. व्हाई? बिकॉज ईगो ईगो के साथ आप हिट नहीं हो रही. अब जब आप पॉज लेके आए हो या आ रहे हो, तो वो आप हार्ट से आ रहे हो, थ्रू योर ओन हार्ट. ठीक है. तो जब आप दिल से किसी से बात करते हो ना, तो अगले की भी फिर दिल में जाके लगती है. लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं, और मैंने ऐसे भी देखा 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 है, अक्सर औकात ऐसे होता है कि नेक्स्ट पर्सन बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ, अम, बहुत दिल से बात कर रहा होता है, उसकी नीयत साफ होती है, उसके अल्फाज ठीक होते हैं, लेकिन कहीं पे कभी कभार हमारे इधर हिट हो जाती है. लेकिन स्टिल, इफ यू वुड जस्ट टेक अ पॉज इन दैट मोमेंट, तो हमें कुछ नजर आए कि हाँ भी, इस सिचुएशन को किसी और तरीके से भी टैकल किया जा सकता है, किसी और अच्छे तरीके में भी आ, इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है. It'll be like, because there, our ego can get in the way, because we want them to do a certain thing and it needs to be done now. That's our own rigidity. But when we can turn it around and go, you know what? I can't actually do this right now. I need to take a break. Even if it's for a moment, remove ourselves from the situation until we can, count to 5 or, whatever, and come back and go, you know what? I was wrong. I'm talking with our children at this moment. I was wrong. I did wrong. And children are so resilient. I know we've jumped to two different extremes, but I think children are resilient. And when we can teach them resilience, like I was wrong, With they'll, their own example. yeah, they'll learn so much from us as well, like when they're wrong and later on in life. And that's actually what I'm experiencing at the moment, is that someone close to me is picking up on the wrongness of others. And so they're dealing with that and telling them. And, they're still growing up. So they don't have maybe the right words to share that properly or to express that properly. But they see the wrongness in what other people are doing. And so it's like they'll come back and they'll ask, how do I do this or how do I do that? It's like, okay, just take a break. Just take a break. That's all. And you'll know what to do. It's really about trusting our wisdom as well. That's returning back to our fitrah, trusting our wisdom. That's where the empathy where empathy lies, is in our fitrah. And it's not even having to remember, what empathy is. It's in us. It's just covered by our thoughts, by our clouded thinking, but once all that blows on, the wind has taken the clouds away, what we naturally come back to is our fitrah. And with our fitrah is empathy. So we don't even have to work on it or, do anything for it. That's what what Anam and I both share, is that subtractive psychology. So it's about coming back, letting those thoughts fall away or fly away or however you want to do. Like, there's nothing to do for that to happen except for realizing it comes through insights really at the end of the day.
I guess the illusion is the ego. Ego is illusion, the illusion of something that is not there or something that we want to be there. But when that falls away, the illusion drops, the glass seal. When we break through that glass ceiling, we see life from a totally different perspective. We've had that. Ego is just like a distraction. Yeah. Ego is just like a distraction. Yeah. Distraction from your own self, from your own fitrah, from your own wisdom. Jazakallah khair. Why, Yaki, Jazakallah khairan kasira for you too, sis. What you would like to share with our audience at the end, your insight or something like that? What I like to share, which I think is something that is so powerful, is that we don't have to be scared of our thoughts. At the end of the day, it's thought. It can stop us from doing a lot of things or saying things, to speak from that space of empathy, from that space of our fitrah. When we're in our fitrah, those words don't come from us then. They come through us, but they don't come from us. They come from Allah subhanahu wa ta'ala. What would you like to share, ma'am? I guess whatever you have shared so far, that is so powerful, and I'm so grateful for you. I'm so grateful for you आपने too. हमारी ऑडियंस के साथ ये शेयर किया. It is really important. और हमारी सर्कल में, हमारी सोसाइटी में, हमारी इस इंडस्ट्री में इस पे बात नहीं की जाती. इसको इस तरीके से देखा नहीं जाता. फॉरेन हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं और हम उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, just to run away from our own uncomfortable thinking. We don't have to run away from our own thinking. We don't have to. We don't have to suffer more by distracting from our own self, by running away from our own self, from the reality. कब तक भागेंगे और कहाँ कहाँ से भागेंगे? ये हमारी ही थिंकिंग है एट द एंड ऑफ द डे, और हमें ही इसके साथ डील करना है. डील करना इतना कोई मुश्किल नहीं है. We just have to accept it, comfortable with our discomfort. We have to have that empathy for our own self first. Absolutely. It has nothing to do with anybody else. Once you would start becoming empathetic with your own self, automatically ये फिर दूसरों के साथ भी start हो जाएगा. But first, we just have to be gentle. We just have to be empathetic with our own self. That's so true. It starts with us. It starts with us as individuals first, which comes back to what I was sharing at the start. You can't change Allah won't change the situation of a person unless until we change what's in ourselves. Absolutely. Because then, when it starts with us, it's the ripple effect on others. It's just sharing with others. I guess it starts with us and it ends with us as well. Jazakallah khair, sis. I think that's a beautiful space to finish our first session. Absolutely, inshallah. Why, my dear. Inshallah, next time हम एक नई एपिसोड के साथ आएंगे और नया टॉपिक लेकर आएंगे इंशाल्लाह. Or if you would like to have some kind of a question from us, you're more than welcome to raise that. Yes. We would love to answer that, inshallah. Take a very good care of yourself. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.